A warm welcome and fresh morning to everyone present in today's lecture. Since last 1 month, V88 Student Wing Committee is conducting the Research Statistic Lecture Series. And I am very sure that this lecture series is definitely helpful for each and every student. We try to cover every topic and basically to clear the basic concept of students regarding this topic. For this, the great share goes to our respected speaker, Dr. Amit Nakankar sir, who, with their busy schedule, take out their time and help us to boost our knowledge. Dr. Amit Nakanikar sir, had his qualification of BMS from GS Gune Ayurved College, Ahmednagar, MD from DMM Ayurved College, Yavatmal. Postdoctoral fellowship is Transdisciplinary Research, Pune University. His designation is as Assistant Professor in Kaya Chikitsa from Government Ayurvedic College, Nagpur. He is having experience of 9 years in Kaya Chikitsa. He is an approved PhD co-guide University of Mandasovar, also an MUHS Nashik. He had also experience doing 26 national and international conference publication. He is awarded as a recipient of Young Research Award by Government of Maharashtra and Trinity Group. For today's lecture, I would like to invite our most favorite teacher, Dr. Amit Nakanikar sir. Welcome, sir, and I request him to start our lecture series. Thank you. First of all, I would like to thank all the arranging committee, all the ATA committee, Krishna ji, Maitri, Dr. Gaurav, and all the team members of ATA Students Wing. Can you hear my sound? Yes, sir. Okay, thank you. So today's topic is a little bit vast topic because there are 3 topics involved in it. The basic intention behind this presentation is just to clear the concepts of variability, probability, and the normal distribution. So with beginning of thanks, let's move to our topic. The first topic would be variability and measures of variability. Can you see this picture? Yes, sir. Yes, sir. Yes. There is someone who is planting the trees, and they say that you should switch to the plastic flower to advance the variability. Mother Nature isn't had a 6 sigma. So you saw any seed, and there will be the crop or the plant will be grown out, है ना? आपने अगर कुछ बीज बोया तो प्लांट एक तैयार होगा, और हर एक प्लांट की जो हाइट है वो सेम नहीं होगी, हालांकि वो एक ही स्पीसीज के प्लांट होंगे. इवन इफ यू सी द ह्यूमन बीइंग, ऑल आर ह्यूमन बीइंग, even all are say Indian or all are say Maharashtrian, they are different from each other. So what does it mean? Even though they are same, yet they are different. Even today, today or from 1 month we are taking the lectures. Our time is fixed, that is 10 a.m. we will be starting the lecture. But we expect that it may be 2 minutes earlier or it may be 2 minutes later. We say that it is 10 a.m. So in spite of having naming some things clearly, we find that there is a difference. This difference is called as a variability. तो जो जीवन में या फिर हर चीजें सेम होते हुए भी डिफरेंट होती हैं. So there are 2 sides of a coin, that is a consistency and a variability. So if there is a consistency, there is a variability. There is a variability, there is a consistency. But ultimately, variability means lack of consistency. आपने एक दवाई एक पेशेंट को दे दिया तो उससे उसको फर्क गिर गया, और वही दवाई आपने किसी दूसरे पेशेंट को दिया तो उस दवाई से फर्क आने को आपको 2 दिन की जगह पे 3 दिन लगता है, या 2 दिन की जगह पे 1 ही दिन में फर्क आता है. But ultimately वो दवाई तो इफेक्ट कर रही है. So what does it mean? It means that medicine is effective, but the response is variable from 1 day to 3 days.
Even you have learned it in say epidemiology, that transmission period of a particular disease varies from so many days to so many days. Or you may have seen that the symptoms in the COVID may occur from 1 day to 5 days. So what does it mean? That it means that in some patient it will come in 1 day, and in some patient it may come up to 5 days. And even though it is that, we will say that this is a normal phenomenon. But though this is a normal phenomenon, this is a variable. So variability is lack of consistency. So हर बार उसी दायरे में होके भी थोड़ा बहुत उसमें फर्क होना, इस चीज को हम कहते हैं variability. And variable is a thing that changes. Variability is a character, and variable is a thing that changes. For example, you measured height of say 70 students in a class. So some has a height of 160 centimeters, someone has a height of say 150 centimeters, someone has a height of say 165 centimeters. In this way, you will calculate the height of all the individuals, and you will draw mean of the mean height of class. Say mean height of class is 172 centimeters, and this is called as a mean. But every student will not have the height of 172 centimeter. So lacking of mean every time is called as a low consistency, is called as a variability. So variability is lack of consistency. So what is variability and measures of central tendency? आप ये ग्राफ देख रहे हो, शायद आपका आई मीन द डेटा प्रेजेंटेशन का टॉपिक हो गया है ना सर? हेलो, so variability and central tendency. So you can see in this graph the central tendency or mean for both the data is same, but variability of both the data is different. In this, in the upper graph, you can see that though mean is same, the variability is more. It means that the distribution is widely spread, and in the graph below, it is a narrowly spread. So normal distribution widely spread, normal distribution narrowly spread defines the variability. So the less the variability, more the consistency, and less the consistency, more the variability. So even though two sets of data have a same mean, they can have different variability. Knowledge of variability and reasons of variability is very essential to carrying out any research work. Variability may be due to individual, subject, item, observer, or investigator, instrument, techniques, reagent, group, or defective study designs, etc. Defective or different study designs. It means that आप में से किसी ने अगर ऑब्जर्व किया तो उसको चीज अलग दिखाई दिया, और किसी दूसरे ने ऑब्जर्व किया तो उसको अलग दिखाई दिया. If you use a different instrument to measure the height, then there will be variability. Suppose you measure a centimeter to measure the height, it will be 170 centimeter, and if you convert it into meter, it will be 1.7. So if you change the instrument, there will be change in the observation also. So this is a variable. Variability is a normal phenomenon, while error is a defective phenomenon. So it is important to know that when variability is a natural phenomenon, while doing the research, we have to take into account the variability. जो भी वेरिएबिलिटी है उसको कंसीडर करके आपको रिसर्च करना होता है, और जो एरर होता है वो डिफेक्टिव चीज होती है. तो एरर्स को दूर करना है और वेरिएबिलिटी को एक्सेप्ट करना है, इस तरीके से रिसर्च आगे करना पड़ता है. सो बिफोर स्टार्टिंग एनी रिसर्च वर्क, it is very important to identify the types of variability that are like to occur
to minimize the variability during the data collection as much as possible. So see this data. Data 1 is the observations in data 1 is 10, 11, 12, 14, 15. Observations in data 2 is data B. Data B is 5, 7, 16, 14, 20. Data set C 1, 30, 2, 4, 25. Data D 12.4, 12.4, 12.4, 12. Now, can you tell me which of these data set has more of a consistency? Anyone? You can put your answers into chat box. D. Yes, D. So data set D has more of a consistency and it has a less of a variability. So the important point is all the if you see all the series, mean for all the series is same, that is 12.4, but composition of data is different. So even though you say that the mean is 12.5, but data is not same. Can you tell me which data set has a more variability? C. Yeah, it may be C, No. it may be some other also. So how Or to B. calculate that measures of variability, that we will see in today's lecture. So there are different measures with the help of which we can calculate the variability. What is the variability? So you, like you say, what is the height? Like you say, what is the weight? So you can calculate weight into kilogram. You can calculate weight into gram. You can calculate weight into pounds. है ना? उसी तरीके से आप वेरिएबिलिटी भी अलग अलग मेजर से मेजर कर सकते हैं. So there are different measures of variability. There are different things with the help of which you will measure the variability. So let's move to various types of variability. There are three types of variability. First is biological, second is experimental, and third is a real. Biological, experimental, and real. What you can do, you can remember it with a simple name, that is bear. है ना? इमली का बूटा, बेरी का पेड़. So this is a bear. Biological, experimental, and real. So when, acha, very good. You can draw a bear also. You will remember it. It will be very interesting. People will understand it. So there are three types of variability. First is biological, experimental, and real. And biological variability also has a 4 types. That is periodical, individual, class or community or category, and a sample variability. You can remember it in a simple word, that is PICS. So there are 3 types of variability: biological, experimental, and real. So biological variability is a variability that is generated from various biological data. है ना? तो बायोलॉजिकल इवेंट्स या बायोलॉजिकल एक्सेप्टेड लिमिट्स से जो भी वेरिएबिलिटी तैयार होती है, द डेटा अराइजिंग फ्रॉम बायोलॉजिकल ओरिजिन, उससे जो भी वेरिएबिलिटी होती है उसको कहा जाता है स्नेहावंक. उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी, है ना? तो इसका मतलब है, आपने देखा कि मैंने जैसे आपको बताया कि साइज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, लाइक साइज ऑफ अमीबा, साइज ऑफ कोविड वायरस, ये जो अलग अलग साइज है ये भी बायोलॉजिकल ओरिजिन से है. सो दैट इज आल्सो अ बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी. हाइट ऑफ इंडिविजुअल्स, वेट ऑफ इंडिविजुअल्स, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, this data is arised from various biological events. So this is a biological variability. मैंने आपको सबसे पहला पिक्चर दिखाया था कुछ प्लांट्स का, अलग प्लांट्स की हाइट थोड़ी बहुत कम ज्यादा थी. that is also originated from biological data. So that is a biological variability. Experimental biological variability is a naturally occurring variability.
Experimental variability occurs when you do some experiment. आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट जब करते हो तो उसमें से जो वेरिएबिलिटी होती है वो होती है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी. लाइक यू डू some chemical experiment, or you should do some physical experiment, or even you can do some biological experiment, so you can have biological experimental variability, है ना. So इस तरीके की भी चीजें हो सकती है. And the real variability is when the difference between the two readings or observations or classes or a sample is more than the defined units in the universe, then that is called as a real variability. So there are these are three types of variability, and there are four types of you can say biological variability. First is a we can say that periodical variability. So some individuals show variations in temperature, pulse rate, blood pressure, WBC count, blood sugar, etc. at different times of a day, and that is called as a periodical variability. You can also say that there is a periodical variability in how much water you will need in summer to drink and how much water you will need in winter. So there is a difference, है ना. जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होते जाता है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर भी चेंज होती जाती है. So that is a periodical variability. So there is also diurnal variation in temperature. There are also diurnal variation in blood pressure. So the variability occurring into those events is called as a periodical variability. Individual variability is some individual will require different amount of water in the same day, while the other individual will require different amount of water. जैसे शायद मैं बात करते वक्त या दिन में पूरे 4 लीटर आज के पूरे दिन में I will drink 4 to 5 liters of water. Someone will drink 2 to 3 liters of water. Someone will drink say more than 5 liters of water. So this will vary according to the prakriti of a patient. So this is called as a individual variability. The another variability is class or community or a category variability. Suppose you are learning into some Ayurvedic college and your friend learning into some different Ayurvedic college. So the average number of you can say marks obtained by the students of one class may be different from the average number of marks obtained by the other class or other college. So this is called as a class variability or a community variability. You can see that the average height of Nepali people is much lesser than the average height of some West Indian people or average height of say Punjabi people. So this is called as a community variability. And the another variability is a sample variability. जैसे कि आपके पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आपने सैंपल ए लिया, सैंपल बी लिया, सैंपल सी लिया, जैसा मैंने पिछले 4 डेटा सेट आपको बताए थे. तो हर डेटा सेट एक ही सैंपल से भी लिया हो मैंने तो भी उसका जो मीन है वो सेम होगा, लेकिन उसकी जो वेरिएबिलिटी है वो अलग अलग. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सैंपल वेरिएबिलिटी. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी: periodical, individual, class, community or category variability, and fourth one is a sample variability. So what are the measures of variability? Variability को कैसे गिना जाता है? So there are various measures of variability: standard deviation, coefficient of variation. These are different measures of variability. Range is also a measure of variability. In the range, what you will do? You will say this is the lowest value and this is the highest value. We can go to this data set again. Now, can you see this data set and say what is the lowest value in data set C? Lowest value in dataset C is 1 and highest value in dataset C is 30. So range of minimum to maximum is 1 to 30.
So range is also a measure of variability. So if there is a more difference in minimum and maximum level, there is a more variability. So these are different measures of variability. First one is a range. Second one is a interquartile range. Then mean deviation, variance, standard deviation, and coefficient of variation. These are different measures of variability. It means these are the different things with the help of which we can measure the variability into the particular data set. So there are different types of measures of variability. Other is measures of variability of sample. तो sample में variability आप कैसे गिनोगे? There are different things with the help of which you can measure. That is standard error of mean, standard error of difference between the two means, standard error of proportion, standard error of difference between two proportion, standard error of correlation coefficient, and standard error of regression coefficient. So these are different parameters with the help of which you can measure the variability. So if you are a UG student, so you can the first one is very much sufficient for you. That is range, interquartile range, mean deviation, variance, standard deviation, and coefficient of variation. And if you are a PG student, you will also have the other parameter, that is standard error of mean, standard error of difference between the two means, standard error of proportion, standard error of correlation coefficient, and standard error of regression coefficient. So अभी मैंने आपको पढ़ाया कि रेंज क्या है ना. So how to measure the range? So minimum and maximum जब आप कैलकुलेट करते हो, so that becomes the range. That is minimum level and maximum level. So the third one is the second one is a interquartile range. Suppose you have arranged your data from minimum to maximum, and in that you will have the interquartile, that is Q1, Q2, Q3. इंटरक्वार्टाइल मतलब ऐसा है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन को आपने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है ना. अभी मैं आपको ये फिर से आई विल गेट बैक टू यू दिस वन. ये जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. इसको आपने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो चार पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए Q1, Q2 एंड Q3. Q1 क्या होगा? 25% of the observation will be on the left side, while 75% of the observation will be on the right side. Q2 means there will be 50-50. So 50 percentile will be there. तो 50% इधर हो गया, 50% उधर हो गया. Q3 means 75% on the left side and 25% on the right side. So ये हो गया Q3. तो ये जो Q3 माइनस Q1 जो होता है उसको बोला जाता है इंटरक्वार्टाइल रेंज. सो Q3 minus Q1 is called as a interquartile range. So with the help of interquartile range, you can also measure the variability. Another one is a mean deviation. Mean deviation का मतलब ऐसा होता है कि समझ लीजिए आपके क्लास में या अभी मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट हैं. वो 10 स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो कुछ इस तरह से है 10, 20, 30, 10, 10, 20, 30 इस तरीके से मार्क्स है. और उस मार्क्स का सबका मीन जो है वो है, आप कंसीडर कर लीजिए कि the mean is say let's go back to this example again. So let's consider this B series. So there are the observation 5, 7, 16, 14, 20. तो इसको आप क्या करोगे? ये ऑब्जर्वेशंस को आप क्या करोगे? इसका मीन निकालोगे, है ना. So the mean is, what is the mean? 12.4.
So 12.4 is the mean. So how much distance the first observation is from 12.4? First observation is 5. 5 is this. How much long from 12.4? You will what you will do? You will do 12.4 minus 5. So it will be 7.6. है ना? So the another observation is 7. What you will do? How far it's 7 from 12.4? You will again do the subtraction. How far it's 16 from 12.4? You will again do the subtraction. So what you will do while calculating the mean deviation, what you will do? You will minus x, that is observation, minus x bar, that is the mean, divided by number of observation. So summation of x minus x bar divided by n is called as a mean deviation. So mean deviation will also give you how much variability is there in the sample. So what is the mean deviation of that particular group or that particular sample? Mean deviation from the ओरिजिनल मीन. तो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन है ना. कहां से मीन डेविएशन कहां से देखा जाता है? मीन से देखा जाता है. That I told you, this is a series. Now you can calculate the mean deviation for the series A. So how will you do it? आप क्या करोगे? 12.4 minus 10, 12.4 minus 11, 12.4 minus 12, 14 minus 12.4, 15 minus 12. तो आपको क्या करना है? ये समेशन जो करना है ना, तो उसमें निगेटिव साइन निकाल देना है ना. तो जैसे कि 12.4 minus 14 आपने भी किया तो वो माइनस आएगा, है ना. या 12.4 minus 15 भी किया तो इट विल बिकम माइनस. उसको आपको ये कर देना है, वर्टिब्रल इसमें डाल देना है. And in this way you can calculate the mean deviation. So what is the variance? Variance ये भी एक variance is equal to summation of x minus x bar square upon n. So there are different formulas of calculating the variance. आप क्या करोगे कि जो x माइनस एक्स बार है जो आपने मीन डेविएशन में किया था उसका स्क्वायर करके उसको जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड करोगे तो वो हो गया वेरिएंस. So when you calculate variance in a sample, what you will do? You will do summation of x minus x bar square upon n minus 1. And when you will calculate variance in a population, you will do summation of x minus x bar square upon n. So आप जब सैंपल से वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे? आप उसको n minus 1 से डिवाइड करोगे. और जब आप पॉपुलेशन का वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो आप उसको n से डिवाइड करोगे. सो पॉपुलेशन से आप क्या लेते हो? सैंपल लेते हो एंड देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यूज. और we cannot apply all the things to the population. Hence we take a sample from the population, we apply the statistics to the population, and then we try to draw the conclusion on the basis of sample for the population. So in this way, in this series also you can calculate. मैंने अभी ये एग्जांपल दिया. It would be interactive, it would be much nice, है ना. तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो. तो व्हाट इज n माइनस n x माइनस x बार स्क्वायर. जैसे a सीरीज आपने लिया है, x माइनस x बार का आपने ऑलरेडी x समेशन ऑफ x माइनस x बार आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया होगा. Can I stop for few minutes so that you can calculate, or I should proceed? समेशन ऑफ x माइनस x बार, इसका मतलब क्या करना है आपको? सीरीज A.
तो x क्या है सीरीज ए में? पहला x1 क्या है 10, x2 क्या है 11, x3 क्या है 12, x4 क्या है 14 और x5 क्या है 15। तो समेशन ऑफ x माइनस x बार मतलब x1 minus 12.4, that is the mean, x bar is mean. So x1 minus 12.4, that is 10 minus 12.4 plus 11 minus 12.4 plus 12 minus 12.4 plus 14 minus 12.4 plus 15 minus 12.4। और ये अगर 12 माइनस 12.4 करने से जो भी निगेटिव साइन आएगा उसको क्या करना है आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और उसका आपको क्या करना है फिर स्क्वायर करना है। और ये जो वेरिएंस है इसमें स्क्वायर क्यों किया गया है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे आप मीन डेविएशन जब कैलकुलेट करते हो तो 10 माइनस 12.4 आपको निगेटिव वैल्यू मिल गया, 11 माइनस 12.4 आपको निगेटिव वैल्यू मिल गया, 12 माइनस 12.4 आपको निगेटिव वैल्यू मिल गया। तो ये जो निगेटिव और पॉजिटिव का कंफ्यूजन होता है तो उसको दूर करने के लिए अगर आप स्क्वायर कर दे तो वो आपको निगेटिव पॉजिटिव का कंफ्यूजन कम हो जाता है और आपको वेरिएबिलिटी और अच्छी तरीके से मिल पाती है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड स्क्वायर ऑफ -5 इज आल्सो 25। तो इसीलिए वो स्क्वायर कर दिया है वेरिएंस निकालने में। यहाँ पे समझ में आ गई आपको बात? तो वेरिएंस इज अ बेटर मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी देन मीन डेविएशन। Variance is a better measure of variability than the mean deviation. हो गया कैलकुलेट? Variance for the series A. ओके, जिसका हो गया है वो बताएगा, और अगर नहीं हुआ है तो we can have interactive sessions also. In that we can do. So अभी वेरिएंस में हमने क्या कर लिया? वेरिएंस में हमने समेशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर कर लिया था और उसको n माइनस 1 से डिवाइड किया था। लेकिन हमने ये क्या किया था? ये स्क्वायर कर लिया था, इसलिए हमने वो ओरिजिनल वेरिएबिलिटी को फिर से वापस पाने के लिए उसका स्क्वायर करके उसका फिर से स्क्वायर रूट निकाल दिया। सो बाय गेटिंग द स्क्वायर रूट व्हाट वी गेट द standard deviation. So square root of variance is a standard deviation. So standard deviation can be calculated with the formula summation of x minus x bar square divided by n minus 1 under root. So under root of summation of x minus x bar square divided by n minus 1. और आप इसको और मैथमेटिक्स लगाएंगे तो x minus x bar का स्क्वायर होगा x square minus 2x into x bar प्लस x बार स्क्वायर। तो उसको अगर आप मैथमेटिकल जो आपने 8th और 10th स्टैंडर्ड में जो मैथमेटिकल फॉर्मूला सुना है उसको अगर लगा के देखोगे तो वो फॉर्मूला हो जाता है समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अपॉन n माइनस 1। और या फिर उसको और मैथमेटिकल प्रोसेसिंग करके दूसरा फॉर्मूला हो जाता है समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर अपॉन n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन के, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए। और अपना जो पहला वाला सीरीज है ये ABC, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये एग्जांपल के ABC के जो स्टैंडर्ड डेविएशंस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, मीन डेविएशंस भी कैलकुलेट कर सकते हो और वेरिएंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? So firstly, what is variability? Variability is lack of consistency. So why we should learn variability? To know about to plan our research by taken into consideration of variability. There are 3 types of variability:
biological, experimental and real. And there are 4 types of biological variability: PICS, periodical, individual, class or community variability, and sample variability. And there are different measures of variability: range, interquartile range, uh, mean deviation, standard deviation and variance. तो रेंज का मतलब क्या होता है? मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू. इंटरक्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या होता है? Q3 माइनस Q1. उसके बाद में मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ x माइनस x बार अपॉन n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. उसके बाद में वेरिएंस क्या होता है? x माइनस x बार का स्क्वायर divided by n minus 1 for sample, and samples of large size or for population summation of x minus x bar square divided by n. उसके बाद में आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या किया? वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल दिया. So there are 3 different formulas of standard deviation. यहाँ तक के मैंने थोड़ा सा समरी कर दी लेक्चर की. Now move ahead. Another one is a coefficient of variation. So the another parameter that we should have is a coefficient of variation. So coefficient of variation can be calculated as SD, that is standard deviation, divided by mean into 100. So you will convert it into percentage. So coefficient of variation can be calculated as SD divided by mean into 100. Coefficient of variation can be calculated as SD divided by mean into 100. आप अगर यूजी या पीजी के भी स्टूडेंट हो ना, आप सबसे पहले एक चीज कर लो, ये जो फॉर्मूला है ना, एक पेज पे अच्छी तरीके से लिख लेना और उसका मीनिंग जो है वो लिख लेना, है ना, ताकि आपको ये चीजें समझने में आसानी हो जाए. So again the same example, series A, series B, series C, series D, you can calculate the coefficient of variation. So what is the SD for A? A सीरीज का SD किसी ने निकाला है? Anyone? The formula for coefficient of variation is SD divided by mean into 100. तो SD कैसे निकालोगे इसका? समेशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर या फिर समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1. तो समेशन ऑफ x स्क्वायर कैसे करोगे? 10 का स्क्वायर हो गया 100, 11 का 100 प्लस 121 प्लस 144 प्लस 196 प्लस 225. ये हो गया समेशन ऑफ x स्क्वायर. समेशन ऑफ x होल स्क्वायर कैसे करोगे? 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 कितने हो गए? 72. हाँ, तो 72 का स्क्वायर करो. One 684. Yes. So what is the summation of x square? पहले हमने किया था ना 100 प्लस 121 प्लस 144 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 225. ये हो गया 786, है ना. 786 माइनस क्या करना है आपको? 72 का स्क्वायर. 72 का स्क्वायर कितना है?
10 plus 11 plus 12 plus 14 plus 15, ये हो गया 62 है ना। 62 का स्क्वायर कितना है? 62 इंटू 62, कितना हो गया? 62 इंटू 62 1684. 62 इंटू 62 3844. 3844, वेरी गुड। 3844 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, n कितना है आपका? 5। 5. 3844 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया आपका 961। 786 माइनस 961 नहीं करेंगे कितने पापा, हो और गया? पापा भी आ रहे हैं, नहीं करने। मैं और कितनी नहीं कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय 5 अपॉन n, तो कितना हो गया? चल कि तू नीनी। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 786, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स कितना हो गया आपका? 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 50, 62 3844 divided by 5, 768.8। तो आप क्या करोगे? 786 माइनस 768.8, ये आ गया 17.2। 17.2 डिवाइडेड बाय n, n कितना है? 5, so it will be 3.44. So 3.44 is the variance, और 3.44 का स्क्वायर रूट, ये क्या हो गया आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ में आ गया? सीरीज ए के लिए समझ में आ गया? What is the square root of 3.44? One 1.85 है ना। So 3.44 is the variance, 1.85 is the standard deviation। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप कैसे निकालोगे? 1.85 डिवाइडेड बाय मीन, मीन कितना है?
12.4 into 100, तो 185 डिवाइडेड बाय 12.4, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। That is 14.91. अच्छा, स्लाइड्स विजिबल नहीं है आपको? यस सर, विजिबल है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला समझ में आ गया? CV इज इक्वल टू SD डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। अभी हमने क्या किया है, अभी जो पहली सीरीज जो आपको दिया था, पहली सीरीज का कैलकुलेट किया है, दिस वन। पहली सीरीज का क्या क्या कैलकुलेट किया हमने? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, वेरिएंस कैलकुलेट किया और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किया। ये फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट किया, ये दिस वन, समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। So what are the uses of standard deviation? Standard deviation summarizes the deviations of large distribution from mean in one figure, and this is called as a unit of variation, है ना? तो वेरिएशन का एक यूनिट है, कितने एसडी से आप बड़े हो, कितने एसडी से छोटे हो, या फिर कितने किलोग्राम से ज्यादा हो, कितने किलोग्राम से कम हो, ये जैसे हम देखते हैं वैसे ही कितना एसडी बिकम्स अ unit. This is a unit of variation. It indicates the variation, whether the variation of difference of an individual from the mean is by chance, that is natural, or it is real due to the some reason. It helps in finding the standard error, which determines whether the difference between two means of two similar samples is by chance or it is by real. And standard deviation also helps in finding the suitable sample size which is required. तो सैंपल साइज ढूंढने के लिए, appropriate sample size for the research के ढूंढने के लिए भी standard deviation काम में आता है. So these are various uses of standard deviation. So यहाँ तक वेरिएबिलिटी समझ में आ गई? अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट वेरिएबिलिटी के क्लियर हो, देन वी विल गो टू द प्रोबेबिलिटी. अच्छा, प्रोबेबिलिटी के स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं? कैन यू सी द Yes, sir. प्रोबेबिलिटी स्लाइड्स? ओके. So if the concept of variability is clear, we will move to the probability. So ये जो चीजें हैं ये इंटरलिंक है, variability, probability and normal distribution. ये जब साथ में होती है ना तभी चीजें समझ में आती है. So variability is science of variation and probability is so let's move to the probability. So in our routine life, आप में सभी लोगों ने अभी छुट्टियां चल रही है, तो most of you will also travel in the summer vacations.
So you must have drawn, ticket, and आपका अगर टिकट वेटिंग में है तो आप ये कंफर्म टिकट या फिर ऐसे कोई भी वेबसाइट्स हो गए उसमें आपने देखा होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग माय टिकट कंफर्म. You can also see, taken see about the probability that what is the probability that Mumbai Indians will not enter into the semi-finals. Based on the various day-to-day life experiences, we must have gone through these real life questions. So what is the and why we do, whether my waitlisted ticket will be confirmed, can I get a confirmed ticket? So probability is a mathematical thing. Many times, while you must have listened to various elections or pre-election polls, who will win, who will become prime minister, who will become chief minister. So all these things are based on the probability theory. So probability is a real life phenomenon. आपने ये भी देखा होगा महाभारत का सबसे बड़ा प्रोबेबिलिटी का साइंटिस्ट कौन था? शकुनी, है ना. प्रोबेबिलिटी ने पूरा महाभारत बना दिया. प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो है, जिसको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई उसको महाभारत समझ में आ गई, और प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आ गई तो पूरा महाभारत खड़ा हो जाता है. So this is very important in our day-to-day life, in research, in everywhere. If we can understand the exact probability and take the decisions accordingly, we can get through it. महाभारत में शकुनी में क्या किया था? डायस फेंका था, है ना. कितने चाहिए? 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, and in this way they played that Euro, and eventually the Kaurava won that game and Pandava lose the game. So if you are perfect in knowing the probability, you can take the decisions accordingly. So probability is relative frequency or a probable chance of occurrence of an event. For example, if you toss the coin, there is a 50% chance that you will get head, and there is a 50% chance that you will get tail. If you throw the dice like shown in the previous figure, there is a 1/6 chance that you will get 1. There is a 1/6 chance that you will get 2. There is a 1/6 chance that you will get 3, or there is a 1/6 chance for getting each number of the value. So this is in simple probability. So this is a relative frequency or a probable chance of occurrence of an event. कोई भी चीज जब होती है, कोई भी घटना जो होती है, तो वो इवेंट या उस घटना का होने का चांस कितना है? प्रोबेबल फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबल चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट. सो प्रोबेबिलिटी की अलग अलग रेंज होती है. प्रोबेबिलिटी 0 मतलब होगा ही नहीं, है ना, और प्रोबेबिलिटी सर्टेन मतलब 100% होगा. What is the probability that we will be in 2021 again? So there is no probability. So we will move to 2023. After 2022, we will move to 2023. We will move to 2024. We will move to 2021. So we cannot move to 2021 backwards. So it is not possible. So when there is no possibility of some events to occur, the probability becomes a 0. And when there is a confirmed probability that that particular event will occur, then that probability is 1. So it is a certain. इसका मतलब ये होना ही है. What is the probability that tomorrow will be Monday? So probability will be 1. So p value will be 1. So it is certain. It will happen. There is another, that is वहाँ पे 50-50% chance है. तो वो हो गया even chance. That is, there is a 50% chance of getting tail, and there is a 50% chance of getting head. ये हो गया even chance. So another is unlikely. That is very less chance. So for example, I show you in the dice.
and you throw the dice, and what is the probability that you will get 6 out of 6? So it is only 1 by 6. So the probability is probability of getting 10 in one tossing of coin is more than probability of getting 6 out of 6 in tossing the one dice. So ये अनलाइकली की तरफ जाने वाली प्रोबेबिलिटी, और लाइकली की तरफ जाने वाली प्रोबेबिलिटी, अगर ये आपको बॉल दिख रहे हैं यहाँ पे, so suppose I pick any one ball, so what is the probability that I will get blue? It is most likely. So the probability is 4 out of 5. ठीक है. So probability is expressed either in percentage or out of 1. For example, probability of 50% means p value is 0.5. So 50 divided by 100 is equal to 0.5. So sometimes probability is expressed in terms of percentage, while sometimes probability is expressed in terms of p value. So probability 100% means p is equal to 1, and probability 35% means p is equal to, probability 35% means p is equal to 35 divided by 100. तो उसका मतलब क्या हो गया? 0.35. P is equal to 0.7 means probability is equal to 0.7. ये हो गया 70 divided by 100. तो probability अगर P is equal to अगर 0.7 है तो probability कितनी हुई? 70%. समझ में आ गया? So why we should learn the probability? हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं, and we do the research on a sample, है ना? So we do the experiment on sample and test the probability that same results that can be obtained into the population. और ये जो probability है ये हम टेस्ट करते हैं कि ये सेम रिजल्ट ऑफर होंगे, और क्या होता है, सेम के सेम वैसे के वैसे नहीं मिलते हैं, उसमें कुछ डिफरेंस होता है. तो वो जो डिफरेंस होता है उसको जो मेजर करते हैं वो हो गया वेरिएबिलिटी. हमने सैंपल लिया, सैंपल में कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट से हमने कुछ कंक्लूजन लगाए, और ये कंक्लूजन लगा के हमने ये देखा कि ये जो चीज है जो हमने सैंपल में या एक्सपेरिमेंट में देखी है ये यूनिवर्स में या रियल तौर पे एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, इसको बोल दिया प्रोबेबिलिटी. और वो 100% उसी तरीके से नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है, उसको बोल दिया वेरिएबिलिटी. अभी इन दोनों का रिलेशन समझ में आ गया आपको, प्रोबेबिलिटी और वेरिएबिलिटी का? गुड. So by knowing the probability, we rule out relative frequency of chance of occurrence. तो जो पर्टिकुलर जो हमने जो रिसर्च किया है वो या रिसर्च फाइंडिंग है सैंपल के, ये रियली इफेक्टिव है या फिर ये बाय चांस आए हैं, चांस ऑफ ऑकरेंस, इससे हम चेक कर सकते हैं. इसीलिए हमें प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए. So probability is denoted by P, and many times P value for the experiment is a probability. P values are given. Why P values are important? Because if you want to publish good paper, if you want to write a good paper, P values are given at least in 4 out of 5 published papers. So before moving to probability, let's move to the some basic concepts of the basic terms that we use. Experiment, it is an act which can be repeated under given conditions, while outcome is a single result of a random experiment. Event, it is a set of a group of different favorable outcomes of a experiment. For example, getting one head when the coin is tossed once,
and getting 2 heads when the coin is tossed twice. So if the coin is tossed twice, there is a event is getting the head twice. So there are 3 basic definitions. Experiment, it is an act which can be repeated under certain given condition. So experiment is tossing the coin. Outcome is getting the head. Event is if the coin is tossed twice and getting 2 heads. Or there can be the event coin is tossed 5 times and getting 5 heads. Or event can be coin is tossed 6 times and getting 2 heads and 4 tails. So there can be the different events with same experiment. समझ में आ रहा है? So there are different types of events. One is simple event and compound event. When event cannot be narrowed down to more simpler, then this is a simple event. But if it can be divided into more simpler steps, then it is called as a compound event. Suppose you want to find the Vata Prakriti individuals of your class, then it is a simple event. The occurrence of Vata Prakriti in the classroom, Vata Prakriti individual in your classroom. But if you want to find out whether that particular Vata Prakriti person has Sandigat Vat or not, then this will be the compound event. So in the compound event, what you will have to find out? You will have to find out the Vata Prakriti individual, and then after finding the Vata Prakriti individual, you have to find out whether that individual has a Sandigat Vat or not. So this is the finding the Sandigat Vat in the Vata Prakriti becomes a compound event. So there are again different types. There is again different type of dependent and independent event. If a probability of one event remains unaffected by the probability of another. So the independent event is called as probability of one event is unaffected by probability of another. And the dependent means the probability of event remains affected by the probability of occurrence of another. So there are different, dependent and independent. Sample space means whole set of all possible outcomes in any number of given trials. तो अगर आपने एक ट्रायल दिया, मतलब आपने एक डाइस थ्रो किया, so sample space is getting 1, getting 2, getting 3, getting 4, getting 5, getting 6, getting 7. That's so up to getting 6 becomes a sample space. Equally likely. A set of events are said to be equally likely or symmetrical if none has given preference of occurrence over the another. जैसे किसी एक को प्रेफरेंस नहीं दिया है, सबके आने की संभावना सेम है, तो इट बिकम्स इक्वली लाइकली. So if you toss the coin, there is an equal chance of getting head or equal chance of getting tail. Subjective probability assigned to an event based on subjective judgment, experience, information, and belief. It's called as a subjective probability. Conditional probability that it is the probability that event will occur in given that another has already occurred. तो conditional probability मतलब कि एक इवेंट ऑलरेडी हो गया है, उसके ध्यान में रखते हुए दूसरे इवेंट की probability. That is, what is the probability of getting good crop if there is a 100% rain? So the event of the first event is getting 100% rain, and second event is getting good crop. So getting a good crop in the presence of 100% rain becomes a conditional probability. Joint probability. Joint probability means probability of intersection of two events.
Marginal probability means probability of a single event without consideration of any other event. Another one is conditional probability. अभी जो हमने पढ़ी conditional probability. So conditional probability can be calculated with the formula probability of A and B divided by probability of B. तो ये प्रोबेबिलिटी का रियल फंडा क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप. If an experiment is repeated n times and event A is observed f times, then probability of A, that is probability of occurrence of an event, is f divided by n. मतलब आपने एक जो एक्सपेरिमेंट है वो n नंबर ऑफ टाइम्स किया और आपका जो इंटरेस्टेड इवेंट A है, so probability of occurrence of an event A is f divided by n. So p is equal to number of events occurring divided by number of trials. चलो अभी आपको कितना समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी का ये देखिए है ना. तो ये सब आपको हियर है 20 नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स है ना. 20 ये बॉल्स है अलग अलग कलर की. So which color has 0.25% chance of being chosen? कोई बता पाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 20 है ना. आपको कितना चाहिए प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू 0.25. तो 0.25 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय, सो p इज इक्वल टू 0.25. आपको क्या ढूंढना है यहाँ पे f ढूंढना है. सो p इज 0.25. 0.25 is equal to f divided by n is equal to 20. So 0.25, so f is equal to 0.25 into n. समझ में आ गया. f is equal to 0.25 into n. तो n कितना है 20. यहाँ पे n कितना है 20. So 20 into 0.25 कितना हो गया 20 into 0.25 20 divided by 4. So 20 divided by 4 कितना आ गया 5. So 5 फ्रीक्वेंसी कौन से बॉल की है वो देखो 1 2 3 4 5 ऑरेंज कलर के ऊपर. So now you can see what is the समझ में आ गई ये बात. F is equal to P is equal to F upon N. तो इसमें आपको क्या दिया है P वैल्यू दिया है और आपको N दिया है. आपको क्या ढूंढना था फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5. तो 5 फ्रीक्वेंसी कौन से कलर की है ऑरेंज कलर की. There are different laws of probability. First law is the addition law. Addition law is if the two events are mutually exclusive, then they follow addition law of probability and they are denoted as OR. The probability of occurrence of either event A or event B
or both is obtained by adding the probability of both events. उससे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना. When occurrence of one event excludes the occurrence of another event, then such event is called as mutually exclusive event. अगर आपने कॉइन टॉस किया और आपको हेड मिला तो it has automatically ruled out the probability of getting tail. So getting head or getting tail are mutually exclusive event. तो mutually exclusive event का मतलब क्या है, एक तो A आएगा नहीं तो B आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे. अगर दोनों साथ में नहीं आते हैं तो वो हो जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. समझ में आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. So if there are two mutually exclusive events, then probability of occurrence of those two mutually exclusive events can be calculated by adding the probability of them, and this is called as addition law of probability. So this is a mutually exclusive event. You can see it. This is the event A. This is the event B. So you can see the red one is mutually exclusive event. Here is the A and B, not mutually exclusive, and you can see these are not mutually exclusive. This is also not mutually exclusive. These are mutually exclusive. Again, multiplication law of probability. This law is applied to two or more events occurring together, and they must not be associated. That is, they must be independent of each other. So we can see that dependent and independent event, like getting a crop in presence of 100% of rain. Presence of 100% rain. So getting a good crop is dependent on getting a 100% rain. So if the events are independent, then there can be the compound probability, and this is denoted as with the help of multiplication law of probability. So they are denoted as A and B. So अगर वहां पे A and B ऐसा लिखा होगा तो कौन सा लॉ आएगा, मल्टीप्लिकेशन लॉ आएगा. और A और B और अगर आ गया बीच में तो कौन सा लॉ आएगा, एडिशन लॉ आएगा, है ना. अगर और आ गया तो एडिशन लॉ, और अगर एंड आ गया तो मल्टीप्लिकेशन लॉ. So compound probability. Let us move to the compound probability. Suppose you roll a dice and spin a spinner. So what is the probability that you will get 1 and red? So probability of rolling the dice and getting the 1 is 1/6, and probability of getting the red in this spinner, that is there are 4 different colors, getting the red in this spinner is 1/4. So probability of getting all together is 1/6 into 1/4. This is a compound probability. This is a multiplication law of probability. So the probability of getting those all the A and B together is 1/24. समझ में आ गई? This is a multiplication law of probability. स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? यस सर, विजिबल है. बीच में चला गया था क्या स्क्रीन विजिबिलिटी? नहीं, चालू है सर. एक मैसेज आया है कि again binomial law of variability. So there are different distributions. जैसे आपने अगर डेटा को अरेंज किया है तो अलग अलग तरीके से उसको अरेंज करने के बाद में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं. एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन.
हमें सिलेबस के लिए सिर्फ बायनोमियल ही डिस्ट्रीब्यूशन है, और बायनोमियल हमें सिलेबस के लिए सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना। बायनोमियल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो मीन जो होता है वो उससे बाकी के साइड का डेविएशन जो होता है वो ज्यादा होता है, वो हो गया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें सिलेबस के लिए जो है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम प्रोबेबिलिटी के बाद में पढ़ेंगे। तो हम जो भी प्रोबेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, वो सभी फॉर्मूले, ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं ना, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये सभी चीजें जो होती है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इर्द गिर्द घूमती है। तो अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो पैरामेट्रिक टेस्ट लगेगी, अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रोबेबिलिटी का ये लगेगा, अगर वो, और वेरिएबिलिटी का ये। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है तो फॉर्मूला भी अलग अलग चेंज हो जाते हैं, टेस्ट कौन सी लगानी है वो भी चेंज हो जाता है। So what is the utility of various laws of probability? Various laws of probability are applied for various types of distribution. Various laws of also applied for various types of condition, है ना, कौन सी कंडीशन है उसके हिसाब से अलग अलग लॉज अप्लाई होते हैं। एंड दीज लॉज हेल्प अस टू चेक वेदर द पर्टिकुलर इवेंट इज ट्रू और दिस हैज अकर्ड बाय चांस, है ना। ये जो पर्टिकुलर रिजल्ट हमको हमारे इसमें मिले हैं, फाइंडिंग्स मिले हैं, ये ट्रू फाइंडिंग है जिसको यूटिलाइज करके हम आगे कुछ कर सकते हैं, या फिर कुछ डेफिनेटिव स्टेटमेंट लेना चाहिए, या फिर दिस इज ड्यू टू चांस एंड वी शुड निग्लेक्ट इट। So this is the basic utility, and the laws are also these various laws are also useful for various types of research designs. अभी ये रियल वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे करते हैं, है ना। ये सबसे पहले समझ लो, ये अगर समझ में आ गया ना तो सब कुछ समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी भी समझ में आ गया, वेरिएबिलिटी भी समझ में आ गया। रियल वर्ल्ड में क्या करते हैं हम लोग अलग अलग तरीके के मॉडल्स करते हैं, है ना। वी डू सम ऑब्जर्वेशंस इन द रियल वर्ल्ड, देन वी डू द वेरिफिकेशन ऑफ दैट रिजल्ट्स, and then we again do the modeling, and then we interpret. In the real world, what we do, we collect the data, we apply the statistics to that data, then we apply the probability theory or then the probability modeling, and we make predictions or we may take some decisions, and then again we apply those predictions or those decisions to the real world. और दूसरी बात हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में अलग अलग मॉडल भी बना सकते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड में आपने ऑब्जर्वेशन किया, वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद में फिर क्या किया, रियल वर्ल्ड के रिजल्ट्स देखे, और आपने अगर कोई मॉडल बनाया होगा तो वो रियल वर्ल्ड पे टेस्ट किया। So this is how laws of various probability can be applicable in the real world. So thank you. Now we will move to normal distribution. अच्छा, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। Okay.
So we will not go into the parametric test, though this presentation contains some parametric test तर slides. फुल स्क्रीन कराल. हाँ केलिए ना full screen के. So we will not go into the parametric test because the parametric test topic will be covered by someone else. So I will just go about the normal distribution. So the distribution through which the dispersion of the data around the mean can be understood by the means of deviation is called as a normal distribution. मतलब जो डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मीन के अराउंड वो स्टैंडर्ड डेविएशन के तुलना में जब आप कैलकुलेट कर सकते हो तो वो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन or to determine the probable chances of observation being normal because of the larger deviation from the mean may have unfavorable prognostic value for the various diseases. So the basic importance is normal. फाईल ओपन कराल नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन ची. फाईल ओपन नाही होते, झाली नाही अजून. नहीं ओपन है. नाही सर, वरती फाईलच ओपन नाही ऍक्च्युअली. त्यावरती क्लिक केलेलं आहे फक्त. ओके. आता हा सर, आता झाली आहे. आता दिसतंय. हो सर, दिसते, आता दिसते. So the distribution through which the dispersion of the data around the mean can be understood by means of a standard deviation is called as a normal distribution. Or to determine the probable chances of observation being normal because of the larger deviation from the mean may have some unfavorable prognostic value in various diseases. So normal distribution जो होता है, it is a distribution in which most of the data values cluster around the mean. So mean के इर्द गिर्द जो भी डेटा की वैल्यूज होती है उसको कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. So अगर मैक्सिमम डेटा मीन के अराउंड या सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड अगर सिचुएटेड है तो वो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. वो आपने पढ़ा होगा कौन से हैं, मीन, मोड एंड मीडियन. तो उसमें से जो मीन है, मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो समेशन ऑफ एफएक्स अपॉन समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इससे क्या करते हैं आप, मीन कैलकुलेट करते हैं. और बहुत से जो वैल्यूज है वो मीन के अगर आजू बाजू में पड़े हो तो उसको कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर वैल्यू मीन से ज्यादा दूर हो तो अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशंस बनते जाते हैं. अगर मीन के राइट साइड में आधे और मीन के लेफ्ट साइड में आधे, ऐसा अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको कहा जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. या फिर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. या फिर अगर किसी एक ही साइड में हो, सिर्फ राइट साइड में, मीन के सिर्फ राइट साइड में ज्यादा वैल्यूज है तो वो हो गया स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. या मीन के सिर्फ लेफ्ट साइड में ज्यादा वैल्यूज है तो वो हो गया स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. और दूसरा जो होता है वो होता है पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन. मैंने सिर्फ आपको ये समझने के लिए ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस आई हैव टोल्ड यू, बट फॉर सिलेबस यू हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली. So most important and most widely used distribution in the statistics is normal distribution. So mu is the mean, sigma square is the variance. तो अभी मैंने आपको variance कैसे कैलकुलेट करना है, डेटा क्या है, वो सब बता दिया है. तो अभी आपको ये थोड़ा बहुत नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझने में आसानी होगी. So sigma square is the variance and sigma is the standard deviation. So standard deviation is denoted by sigma or it is also denoted by SD, है ना. Mu is also denoted as, mean is also denoted as a mu and x bar. So x bar से भी mean denote होता है और mu से भी mean denote होता है.
It is well known fact that the normal distribution approximates many natural phenomena. They are seen in many situations naturally. So it has developed as a standard reference for many probability problems. Example, in any examination, the bulk of a student will score average, while the smaller number of students will score B grade or D grade, or usse bhi, and even smaller percentage of students will score at A. So this creates the distribution that resembles a bell. So normal distribution is a bell shaped. It is also known as a bell curve. The bell curve is symmetrical in this curve, and half of the data will fall to the left of the mean and half of the data will fall to the right of the mean. Many groups follow this pattern and it is widely used in business, statistics and various medical sciences. This is a normal distribution. ये normal distribution में क्या होता है कि 68% जो वैल्यूज है वो मीन प्लस माइनस 1 एसडी होता है. तो मीन प्लस माइनस 1 एसडी 68% में भी 34% मीन प्लस एसडी और 34% मीन माइनस एसडी. 34% मीन प्लस एसडी, 34% मीन माइनस एसडी और 68% mean plus minus एसडी. So 95% of the values revolves in mean plus minus. 68% of the values revolve in mean plus minus 1 SD. तो ये SD जितना कम होगा, इसका जो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीक है ये इतना ही ऊंचा होगा, और मीन SD जितना ज्यादा होगा उतना ही ये दिस विल बी डाउनवर्ड, जो मैंने आपको वेरिएबिलिटी वाले इसमें बताया था. सो इफ द वेरिएबिलिटी इज मोर, there this normal curve will be widely spread. If the variability is less, this normal curve will be smaller place. There are 95% of the observations, they lie in the mean plus minus 2 SD, and 99% observation lie mean plus minus 3 SD. So these are the basic qualities of normal distribution curve. Uses: normal distribution is used for calculating heights, weights, or defining whether that particular height or weight is normal or not. It is also used in measurement of errors. It is also used for calculating various intelligence quotient. It is also used for calculating the salaries. Normal distribution is also used to check the guidance of normality. So here you can see IQ score, the 85 to 115, and a mean plus minus 1 SD. People has 68% of the IQ. You can also see that the 70 to 135 covers mean plus minus 2 SD of value. So these are very low scores and these are very high scores. The middle one is high situated. So these are the characteristics of normal curve. So Abraham de Moivre first discovered this normal distribution after the mathematician Carl Friedrich Gauss. So Gauss has find out a different curve known as Gaussian curve or a Gaussian distribution, while Abraham de Moivre he find out the normal distribution. So what are the characteristics of normal curve? So this is a very important question. It will be asked in the examination. It is a bell shaped. It is a symmetrical. Mean, median, and mode they coincide. It is a unimodal. It is a asymptomatic. A curve has a line that gets closer whenever intersect. When standard deviation is large, the curve is short and wide. When the standard deviation is small, the curve is tall and narrow. So here you can see
the curve is tall and narrow, and here you can see short and wide. The curve on the left is shorter and wider, and curve on the right is taller. What are the features of normal distribution? Normal distributions are symmetric around their mean. Mean, mode, median of normal distribution are equal, and the area under normal curve is equal to 1. Normal distribution are denser in the center and lesser dense in the tails. Normal distribution are defined by the two parameters, mean and standard deviation. 68% of the area of normal distribution is within 1 SD, and 95% of the area of normal distribution is within 2 SD. About 99.7% of the area under the curve falls within the 3 SD. So if there is a 3 SD, then P will be out. If the observation is out of 3 SD, then the P will be less than 0.01. मतलब 99% से कम होगा. And if it is the 95 2 SD, then it will be the P will be less than 0.05. तो मैंने आपको जो P वैल्यू प्रोबेबिलिटी जो बताया था वो हो गया प्रोबेबिलिटी, मतलब वो हो गया P वैल्यू. So this is the empirical rule. So 68% of the distribution lies within 1 SD. It means the variability, we will be calculating the 1 SD variability. 95% of the distribution lies within the 2 SD, and 99.7% of the distribution lies within the 3 SD. This is a formula for normal distribution. If mu is equal to 0 and SD is equal to 1, then the distribution is called as a standard normal distribution or unit normal distribution. This is denoted by N01. What are the practical applications of normal distribution? We will learn that and then we will stop. The standard normal distribution helps us to figure out which subject is getting good grades, or which treatment is better effective, or which drug is effective, or which experiment is likely to occur, which results of which experiment likely to occur in the population or a real world. So इन सब चीजों को देखने के लिए आपको normal distribution की utilization होती है. If the score is above 2 SD, above the mean, then there are lesser chances of occurring. In English, 1 standard deviation above the mean. This tells that the mathematics score is far higher than most of the students. Based on the data, we can conclude that we actually perform better in mathematics than the English. ये आपको example बता. ठीक है. Suppose if you get 90 in mathematics and 95 in English, you might think that you are better in English than in maths. However, in mathematics, if your score is 2 standard deviation above the mean, that is, if your score is more than 2 SD, है ना, तो आपके क्लास के बाकी बच्चों के साथ में कंपेयर किया जाए तो आपका स्कोर अगर जो है वो more than 2 SD है और आपका इंग्लिश का more than 1 SD वाला स्कोर है, तो ये बताता है कि आपके क्लास में आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो. Because your score is higher, that is more than 2 SD. So parametric test अपने lecture का part है ही नहीं. So we will stop here after learning about the
normal distribution. I once again thank all the organizers of ATA. I thank all the all the arranging committee for giving me opportunity to interact with you, and it was really a very nice experience. Thank you very much. Thank you very much, sir, for giving such a valuable guidance. Your today's lecture is fabulous, and definitely each and every student gets lots of knowledge about variability, probability, and normal distribution. Thank you so much, sir. I would again like to thank Dr. Suryavanshi sir, Dr. Gaurav Savakar sir, and Dr. Chandrakar sir, and our ATA student wing president, Dr. Krishna Devulkar sir, for organizing such kind of lectures and serve for the students' knowledge. Thank you so much, everyone, for joining today's lecture, sir. Thank you so much. Thank you, Amit sir. Dr. Gaurav. Thank you. Thank you. Thank you, Gaurav sir. Thank you. Can I leave meeting?